రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. లైవ్ లో చూద్దాం. I refer with profound sorrow to the passing away of Shri Dipen Ghosh, a former member of this House, on the 13th of November 2016 at the age of 84 years. Born in February 1932 at Jessore, now in Bangladesh, Shri Ghosh was educated at the Surendranath College, Kolkata, and the University of Calcutta. A trade unionist, Shri Ghosh was associated with several trade union as well as workers and employees associations. He served as the president of the Coordination Committee of Central Government Employees and of the All India State Insurance Corporation Employees Federation. He also served as the vice president of All India Defence Employees Federation and as the chairman of the West Bengal Surface Transport Corporation. Shri Dipen Ghosh represented the state of West Bengal in this House for 2 terms, from July 1981 to July 1987, and again from July 1987 to July 1993. In the passing away of Shri Dipen Ghosh, the country has lost a veteran trade union leader and an able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Shri Dipen Ghosh. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. छब्बीस नवंबर 2008 को हुए हमले में मारे गए और गंभीर रूप से घायल होने वाले निर्दोष लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। नवंबर 2009 में आज के दिन ही सभा ने आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया था। आज हम पुनः प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने देश से और पूरे विश्व से आतंकवाद की बुरी ताकतों को परास्त करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। यह सभा आतंकवादी हमले का मुकाबला करते समय हमारे बहादुर सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस, शूरवीरता और निस्वार्थ सेवा को पुनः स्मरण करती है। सभा इस हमले तथा आतंकवाद के शिकार हुए लोगों के परिवारों और उनके संबंधियों के साथ है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन। माननीय ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज बुक रिलीज के फंक्शन पे रिलीज के फंक्शन पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि अपोजिशन पार्टी मनी श्री मनोज में है। ये one second पूरी let me do this प्रधानमंत्री जी किस तरह से ये आरोप लगा सकते हैं। let me do this please stop श्री मनोज सिन्हा let me do this ये बता दिया श्री मनोज सिन्हा कि हम बलात्कारी के खिलाफ हैं। मनोज सिन्हा उनकी प्रेजेंस में बता दिया था और उसके बाद माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला रखने वाले कागजात के संबंध में आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4(1) से 4(2) तक उल्लेखित कागजात सभापटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। श्री अजय टमटा I beg to you on the table in the House paper mention against my colleague Shri Ajay Tamta's name at serial number 5 as per today's Mr. Business. श्री मंशूर
Mandavia. The commissions I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Shri P.P. Chowdhury. P.P. Chowdhury. Chowdhury है? कोई भी चौधरी Okay. No. Now please. Arey, let me finish. Let me do this. Mr. Ali Khan. Report of the Joint Parliament Committee on Office of Profit. Dilip Bhai Pandya. Shri Dilip Bhai Pandya. Yes. आपकी अनुमति से आपके संबंधी संयुक्त के 13वें प्रति सभा कर रखता हूँ। धन्यवाद। Report of the Department-led Parliamentary Standing Committee on Railways, Sri Motilal Vora. Yes, you can place it. I make to lay this the standing Report of the Committee on Public Undertaking, Sri Narendra Budania. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध सरकारी हुक्मों संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन की एक प्रति सभापतियों को रखता हूँ। Statement by Minister Sri Manoj Sinha. You can lay on the table. Before the Honorable Chairman, I would like to make a statement regarding the focus of implementation of the recommendation contained in the 26th report of the committee on the technology and demand for grant 2016. Sri Rajan Gogen. Standing Committee on Railways, 16 Lok Sabha in presence of Directive of the Honorable Chairman, Rajya Sabha issued by Rajya Sabha Bulletin Part 2 dated 28 September 2004. The 9th report of the Committee on Demand for Grants 2016-17 of the Ministry of Railways presented to the Rajya Sabha on 25th for 2016 contained 42 recommendations and action taken notes thereon were furnished to the committee on 28/8/2016 in English and on 6/9/2016 in Hindi. A statement showing details of all the recommendations contained in the report and in implementation status thereof is enclosed. Since the statement is voluminous, I request that the same may be taken as read. Now, statement regarding government business, Sri Mukhtar Abbas Naqvi. With your permission, Ali. The government business during the Yes, commencing on 28 Business, yes, November सुनिए 2016 will consist. अरे सुनिए The अरे लो आप लोग सुनिए consideration of any item of the government business carried from our today's order paper consists HIV Deficiency Prevention and Control Bill 2014, Employees Compensation Amendment Bill 2016 as passed by the Lok Sabha, the consideration and passing of the Enemy Property Amendment Bill 2016 as passed by the Lok Sabha as reported by the Senate Committee of Rajya Sabha, the consideration and passing of the Prevention of Corruption Amendment Bill 2013, further consideration and passing of the Whistleblower Protection Amendment Bill 2015, consideration and passing of the Administrative Jurisdiction and Settlements Marine Claim Bill 2016 after it passed by the Lok Sabha, consideration and passing of the Surrogacy Regulation Bill 2016 after it was passed by the Lok Sabha. Okay. Now please. Honorable lady member. Honorable lady member. Please. Honorable lady. Arey Suniye. Please listen to me also. Give me also 2 minutes. Number one. See. I will allow you. Let me see. I have first a notice under Rule 267 from the Honorable Leader of Opposition. I am ready to admit that motion, provided you are ready for discussion. No discussion.
No, I will. no, I cannot. I will reply to that. I cannot. अरे मुझे reply कर. No, please, That yes. is my motion Yes, has been Ghulam Nabi. replied. Ghulam Nabi, what is your reaction? What is your reaction, Honorable Leader of Opposition? I'm ready to admit your motion. Sir, If you are ready for discussion. Sir, I have given the motion. There are two conditions for that. Number one, the Honorable Prime Minister, as promised yesterday, that he will be here. There is no condition in this motion. For this motion, there are That conditions. is our condition. If I give the condition, the chair will reject it. If I give the condition, it will be rejected. I know. Such condition, such. And number two. No, please, please allow me to deal with that. Nathwiji, tell them, please allow me to deal with that. Please allow me to deal with that. Okay. मैं आ जाऊं. दूसरा नंबर सर, दूसरा No, please allow me. आप मंत्री हैं. सर, जब हमने नोटिस दिया था और नोटिस कल दिया था, कल दिन और आज दिन में, आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइब्रेरी में वो तो दूसरी बात, ऑडिटोरियम उसके बारे में बोलो. बुक रिलीज किया. नहीं, वो इस सदन से संबंधित है. That is directly connected with this house. That is directly connected with this house. सर, जब मैंने कल प्रधानमंत्री जी आए थे, That has nothing to do with this. मैंने जब कल माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में आए थे, मैंने अपोजिशन की तरफ से, पूरी अपोजिशन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया था और कहा था माननीय चेयरमैन से, unless you hear us, please hear me out. Unless you hear me out, you can't take the decision. हमने चेयर उस वक्त थे माननीय चेयरमैन, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पहले ये स्पष्ट किया जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी डिबेट में हिस्सा लेने आए हैं अरे या कल एक क्वेश्चन घंटा आए आवर में थे. हिस्सा लेने आए हैं. यदि अगर No, it was. listen, No. sir, 0 hour, you have to listen me. But you have to listen me. But I have no problem. See, he is NOP, I will allow. I am not objecting him. I am not objecting his NOP, I will allow. Yes, I am Please allowing hear him. me out first. But one thing I have to make clear. Please hear me out first. Unless you hear me out, you will not be able to take. I will listen to you. Yeah, I will please. hear you. But I have to make one point clear. I have to make one. Sir, after that everybody can speak. I have to After make. that everybody can speak. Honorable LOP, I will allow you, but listen to me also. I have to make one point clear. Yesterday it was clarified by the leader of the House that you resume the discussion, PM will come and intervene. That is the assurance given. Am I correct? So what do you say? Sir, तो हम इतना कहना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं. हमें मालूम है कि उनके सर, एक तर्कों और मिनट. तत्वों सर, के डिबेट में खत्म हो गए डिबेट और इसलिए शुरू हो गई. तमाशे चल रहे हैं. डिबेट को हमारा ये किसने कहना है डिरेल कि किया? हम चर्चा के लिए डिबेट तैयार को हैं, हम अपोजिशन discussion ने के लिए डिरेल तैयार नहीं हैं. किया. हमारी आपसे अनुरोध है कि डिबेट सरकार को चर्चा शुरू करा सरकार ने डिरेल कर दिया, क्योंकि हमारे साथ प्रॉमिस किया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी डिबेट तक खत्म होने तक सदन में रहेंगे. वो नहीं रहे. हर दिन आप एक ऐसी आपत्ति है, और दूसरी आपत्ति है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह कहा कि अपोजिशन इज फेवरिंग ब्लैक मनी. ये तो पूरे सदन का अपमान है, ये पूरी अपोजिशन का अपमान है. कल हमने प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में बता दिया था कि हम ब्लैक मनी के खिलाफ हैं. हमने जब बताया कि एंटायर अपोजिशन ब्लैक मनी के खिलाफ है, तो फिर प्रधानमंत्री जी आज कैसे कह सकते हैं कि अपोजिशन पार्टीज ब्लैक मनी के फेवर में है? इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री